Assalamualaikum viewers, my name is Naila Tareem and I welcome you all to Javed Publishers. आज हम Kids English Grade 3 Chapter number 10 and the topic is double double Clauderon bubble की exercise को solve करेंगे. Take out page number 75 of your textbook, reading comprehension. Answer the following questions. What was the name of the witch and where was she living? The name of the witch was Tituba and she was living in a forest. Why did she hire a boy? She hired a boy because she was too old to do all the work alone. What did Tituba sing over her pasta pot? She sang, what did she sing? Abracadabra, double double Clauderon bubble over the pasta pot. What did Sam do when Tituba left the house? He ran towards the pot and said the same spell which song? Which song? W-H-I-C-H which and then which W-I-T-C-H which sang. Why did Tituba punish Sam and what was the punishment? She saw pasta spilled all over the floor. She punished Sam to eat the pasta at once. Make sentences of the given words in your notebook. यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं, आपने इनके sentences, इनके जुमले बनाने हैं. Number 1, skillful. She was skillful in magic. ये मैं सेंटेंसेस बना रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. नंबर द गिवन सेंटेंसेस इन देयर करेक्ट ऑर्डर. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने बताना है कहानी को पढ़ने के बाद कि कौन सी जो लाइन है वो पहले आएगी, फिर उसके बाद यानी कि क्या हुआ सीक्वेंस आपने बताना है. टिटूबा sang a magic spell over the pasta pot. The pasta overflowed all over the floor. There was a witch, Tituba, who was skillful in magic. Sam observed everything. She hired Sam to help her. When Tituba left, Sam said the magic spell over the pot. So the sequence will be, जो आपके पास ये sentences दिए गए हैं, इनका sequence जो साइड पे blocks हैं उनमें क्या आएगा? 3, 6, 1, 4, 2, 5. Now moving on to the next page. Oral communication, phonics. Read the given words aloud. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपने इनकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है कि आप इनको कैसे बोलेंगे. नंबर 1, क्योर, आर साउंड बहुत कम, क्योर. नंबर 2, पोशंस. नंबर 3, लर्न. नंबर 4, patient. Now arrange the given words in alphabetical order and write their parts of speech they belong to. यहाँ पर आपको इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, यानी कि ए वाले पहले, फिर बी, सी, डी एंड सो ऑन. इस तरह आपने इन तमाम वर्ड्स को अरेंज करना है और आपने बताना है कि कौन सा वर्ड विच पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच वो वाला लफ्ज़ है. जैसे कि हम चैप्टर के हिसाब से उस लफ्ज़ को कैटेगराइज करेंगे कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. कीप वॉचिंग व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.